this video we are going to understand substitution method. Here we are given two set of equations, x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4, and we have to solve using this method which is called substitution. As the name of the method suggests, we have to substitute the values. Now how will I substitute the values? I can find out the value of any of the variable, either x or y, from any of the equation. So suppose if I take this equation, then x की value will be 4 plus y. Now what will I do? I'll substitute this value in the first equation. So it becomes 4 plus y in place of x, plus y is equal to 14. So y plus y is 2y is equal to 14 minus 4. So 2y is equal to 14 minus 4, that is 10. So y will be equal to 5. So I've got my variable, first variable का answer. Now what will be value of x? So x will be equal to 4 plus y, which is 5. So x will be equal to 9. Now how will I check this answer? To check this answer, I need to substitute these values back into the equation. Let us put it in the first equation. So the first equation is x plus y is equal to 14. So LHS में put करेंगे x plus y. So x plus y is 9 plus 5. So 9 plus 5 is equal to 14, which is equal to RHS. Verified. ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. सेकेंड इक्वेशन में LHS क्या है? x minus y. So x minus y means 9 minus 5, and this value will be equal to 4, which is your RHS, and that means this is verified. This is how you have to calculate the answer and verify also. Let us take one more example. This is also given in your NCERT. So what will I do? I will substitute the value as in the previous question. So let us take this equation only. So root 3x की value क्या हो जाएगी? root 8y. So x की value is root 8 upon 3y. Now you have to substitute this value here. So root 2 into x की value is root 8 by root 3 into y plus root 3 into y is equal to 0. Now I can take y common. So it is root 16, और root 16 का आंसर क्या होता है? 4. So 4 by root 3 plus root 3 is equal to 0. Now this term is non-zero. That means y की value क्या हो गई? 0. And if I substitute y की value 0 here, so what will I get? I get x की value 0. And you can check this in my question. If I put x is equal to 0, y is equal to 0. So root 2 into 0 plus root 3 into 0, the answer will be equal to 0. Similarly, root 3 into 0 minus root 8 into 0, the answer will be equal to 0. And here you may have a doubt that why did I write that y is equal to 0. सपोज़ अगर ये आंसर आता 3y इज इक्वल टू 0, तो हम क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू 0 बाई 3. तो आंसर क्या हो जाता है? y इज इक्वल टू 0. ऐसे ही मैंने यहाँ क्या कहा? y मल्टीप्लाई बाय सम टर्म इज इक्वल टू 0, एंड दैट टर्म इज़ नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब किसको 0 होना चाहिए? क्योंकि प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब किसको 0 होना चाहिए? y को 0 होना चाहिए, एंड हेंस दिस आंसर. Now the next method which we are going to solve using that method we are going to solve the equation is elimination method. I have taken the same two equations which I took in the substitution method. Now what is elimination? As the name suggests, we have to eliminate something. तो हम eliminate कैसे करेंगे? जैसे सपोज ये दो equations हैं, ये दो equations को if I add तो क्या होगा? y से y cancel हो जाएगा. So 2x will be equal to 14 and 4 18. So x will be equal to 9, right? And how to find out the value of y? You can substitute the value of x in any one of the equation. So 9 plus y is equal to 14. So y will be equal to 5. This is how you can calculate the answer, and we can very well match with the previous one, or we can substitute these values back into the equation and write down the answer. Now if somebody says कि हमें x नहीं x eliminate करना है, तो x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. Although in this particular set of equations you should be eliminating y only, but अगर मुझे x eliminate करना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इन equations को subtract करना पड़ेगा, because then x minus x क्या आ जाएगा?
0. देन y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 10. सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5. नाउ यू कैन चेक दैट वैल्यू ऑफ y इज़ 5 एंड वैल्यू ऑफ y को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे. x माइनस 5 इज इक्वल टू 4. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9. सो दैट मीन्स आइदर यू कैन एलिमिनेट x or you can eliminate y. So it's up to you, whatever you wish to eliminate you can eliminate and get the answer. Let us see one more. Now let us solve this pair of equation. In this pair neither the coefficient of x is matching nor the coefficient of y is matching, and if we'll add or subtract such equation then we cannot eliminate x or y. So the first rule of elimination is that जिसको आपको एलिमिनेट करना है उसका कोफिशिएंट मैच होना चाहिए. सो इफ़ आई विश टू एलिमिनेट x, मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी. सो इट बिकम्स 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. नाउ इफ़ वील ऐड दीज टू इक्वेशंस तो एलिमिनेशन नहीं होगा बिकॉज 2x प्लस 2x ऐड हो जाएगा, 2y माइनस 3y ऐड हो जाएगा. सो आई विल सब्ट्रैक्ट. यहाँ कोई भी सिंबल नहीं है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस. नाउ दिस एलिमिनेट्स. सो 2y प्लस 3y कितना आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज 6. सो y की वैल्यू विल बी 6/5. नाउ इफ़ आई विश टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x तो फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5. सो x की वैल्यू इज़ 5 माइनस 6/5. So it will be equal to 5 LCM 25 minus 6 that is 19/5. अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है. So what will I do? I'll substitute this value in my second equation. So second equation में क्या हो जाएगा 2 into 19/5 minus 3 into 6/5 क्योंकि y की वैल्यू है 6/5. This is your LHS. So 19 2s are 38 divided by 5 minus 18 divided by 5 which is equal to 20 divided by 5 and is equal to 4 which is the RHS of this equation. And since LHS is equal to RHS therefore whatever answer I have calculated is correct. Now see this pair of equation. In this pair of equation again x के coefficients are not matching, y के coefficients are not matching. एक और problem भी है. Even if I multiply any of the equation by any number मुझे कोई भी coefficient equal नहीं मिल रहा है. तो what will I do in such case? In such case you have to multiply the first equation by, so multiply here in this first equation I am multiplying. What I'll do is I'll equate the coefficients of any one of the variable. Let us say हम y के coefficients को equate करना चाहते हैं. तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है. इक्वेट तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता सिंपली एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके. सो मैं पहली इक्वेशन को 2 से कर देती हूँ और सेकेंड इक्वेशन को 5 से. व्हाट विल हैपन नाउ 5 2s are 10, 2 5s are 10. सो इन सम ऑफ द केसेस दिस ऑल्सो माइट हैपन दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाय सम कॉन्स्टेंट नंबर so that you are getting the coefficients same. Now what will happen? My first equation becomes 16x plus 10y is equal to 18 and second equation becomes 5 3s are 15x plus 10y is equal to 20. Now let us subtract क्योंकि ऐड करने से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला. Subtract, so this get cancelled. 16 minus 15 is x is equal to minus 2. Now if x is equal to 2 I will substitute in my second equation 3x plus 2y is equal to 4. So 3 into minus 2 plus 2y is equal to 4. So 2y is equal to 6 plus 4 10. So y will be equal to 5. Now we can check this value whether it is correct or not by putting in back into the first equation. First equation में 8x. 8x means यहाँ पे अगर substitute करते हैं तो 8x means minus 16 plus 5y. तो 5 into 5 is 25 and what's the answer? It's 9 which is equal to RHS and hence it is verified that both the answers are